Hello, brains. I say that to you because if you think about it, it wasn't really you that decided to come here today. It was your brain. Whether you decided to walk, drive, take a taxi, or ride a bike, that decision was taken by your brain. ADHD is real. As you see, the global prevalence of ADHD on the screen. It is not bad parenting or lack of discipline. ADHD is a neurodevelopmental disorder with measurable differences in brain. Adults have ADHD too. ADHD rates are rising, but that's due to better understanding. It's not because of overconsumption of sugar, not because of too much of technology or lack of spanking. ADHD is serious. It impacts focus, executive functions, emotions, sleep, and more. Medication helps, but it's not enough. Behavior. It's all about behavior. It's affected by the brain. So let's get into the story about brain. Characteristics. Attention, which is not very focused, impulsivity, and hyperactivity. Some people with ADHD are more inattentive, they are daydreamers, the space cadets. Other are more hyperactive, impulsive. Those are kids who usually get diagnosed early. But the most common presentation is combination of both adults and kids. Now let's understand what this word ADHD mean. Attention deficit hyperactive disorder. इसे ADD भी कहा जाता है, attention deficit disorder. This was recognized by doctors since 1902. Initially, it was with little kids who couldn't sit still or stop talking. तो हम उसे कहते थे ये बिहेवियरल इशू है, कितनी बातें करता है, एक जगह पे ठीक बैठ ही नहीं पाता. So from 1980 onward, the disorder was redefined to include attention deficit, emphasizing issues with brain's executive functions rather than behavior alone. Many people with ADHD have no significant behavior problems, and attention difficulties often cause more significant challenges, particularly as life increases. So let's get into the agenda of today's topic. So today what we are going to see is ADHD and yoga, how they amalgate with each other, understanding effects of ADHD on brain functions, and also evidence-based explanation of how yoga targets neurological defect. Now, ADHD is largely inherited. 1 in 4 individuals with ADHD has a parent with condition, often runs in families but can be overlooked. They are doctors, lawyers, business professionals, high achievers, all of them are included in that. Now in next slide we will understand which are the brain parts that impacts ADHD. So let me tell you, there are 4 brain parts. In the figure, if you can see, the pink portion is a prefrontal cortex. Prefrontal cortex, it is used for attention, behavior, emotional responses. Now with ADHD people, attention is switched easily. अभी एक काम करेंगे, तुरंत दूसरा काम करेंगे, स्विच कर लेंगे, हर चीज पे उन लोग नई नई चीजें ढूंढेंगे. Second is the green portion, which is the limbic system. It regulates emotions. Over here, the deficiency of dopamine in the ADHD limbic system result in restlessness, inattention, emotional volatility. कभी स्पर ऑफ द मोमेंट बहुत गुस्सा हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि वो कब कौन सी चीज के लिए रो पड़ेंगे. द नेक्स्ट थिंग इज
blue part, which is basal ganglia. Now, here neural circuit system that regulates communication within the brain. In ADHD brain, a short circuit can cause impulsivity, impulse actions. The yellow portion, which is below the cerebellum, it is reticular activating system, the major relay system between the brain's pathway. A dopamine deficiency may cause impulsivity and hyperactivity. Now, to understand this, we will have to understand the impaired prefrontal cortex. Now, what is prefrontal cortex? एवरीबडी नोज फ्रंटल लोब. हम कपाल भाती में जो कपाल बोलते हैं उसे फ्रंटल लोब कहते हैं. तो समझ लो ये आपका सीईओ है, ब्रेन का सीईओ. दिस स्किल्स हेल्प यू टू मेक डिसीजंस, control impulses, even regulate emotions. Right behind that, the prefrontal cortex is like VIP section. It is tucked right behind your forehead. It is your go-to for essential skills like planning your day, focusing on tasks, even picking up on social cues. The next is basal ganglia, which means cluster of neurons. It's like a backstage crew for your frontal lobe. It is helping to manage everything from movement to emotions and even thinking. So, if we understand the studies that suggest that the cerebellum may be smaller in individuals with ADHD, this could affect motor skills, your ability to pay attention or quickly process the information. If you are experiencing coordination issues, खाना खाते समय हम उन बच्चों को बोलते हैं टेबल मैनर्स नहीं है, but the problem is that coordination issues with the spoon, with the rice, with the thing coming to their mouth. They find it challenging to focus. The cerebellum might be the area to look into. Language difficulties could also be linked to this part of the brain, as Khatau has stated in the autism as well. These problems are pertinent across all deficits. Now, let's understand the prefrontal cortex. ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो किन लोगों के पास होता है? अगर आप देखें तो ह्यूमन बींग्स हैव द फुल्ली डेवलप्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, and the other living beings who are closer to our human beings are chimpanzees and monkeys, जिनके पास ये थोड़ा less developed but closely to human beings developed prefrontal cortex. Cat, rat, इनके पास ये prefrontal cortex बहुत ही less developed होता है. Now, what is this prefrontal cortex? As you can see in the diagram, the red portion, it is higher reasoning, executive function. कौन से 9 functions है? जैसे कि empathy है, insight है, response flexibility है, emotion regulation है, body regulation है, morality, intuition, attuned communication, fear modulation. ये सारी ये जो रेड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उससे जुड़ी है. अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ इज द पर्पल थिंग विच यू आर सीइंग, जिसे लिम्बिक ब्रेन कहते हैं. उसमें क्या होता है लिम्बिक ब्रेन में? फाइट, फ्लाइट, फ्री स्ट्रेस रिस्पॉन्स. मैं फाइट करूं या फिर मैं भाग जाऊं इस कंडीशन में, ये डिसीजन यहां पे लिया जाता है. मैं यहाँ पे सेफ हूं क्या? एम आई सेफ? डू पीपल वांट मी? दिस इमोशंस आर ऑल कमिंग फ्रॉम दिस रीजन. So it's very important to understand the dopaminergic pathways. Reduced dopamine transmission impacts motivation, reward processing, and focus. So now we will see in the next slide how the brain works for ADHD. If you see, there are 2 figures of brain, and we are going to understand neurobiology of attention deficit hyperactive disorder. और prefrontal cortex जो हमने अभी बात की plays a very vital role. Now there are 2 approaches, top down attention or bottom up attention. Now what is top down attention? The prefrontal cortex mediates top down attention.
regulating our attention so that we devote our resources to that which is relevant to our goals. The prefrontal cortex allows us to concentrate and sustain our attention, especially under boring conditions, such as long delays between stimuli. एग्जाम्पल ले लीजिए, टीचर बहुत ही धीमे बात कर रही है, बहुत बोरिंग है लेक्चर, बट I have to be focused. So the PFC helps us to focus on material. That is important. Even though it is not uh, inherently salient to stimuli, it's not appealing me, but हम इनहिबिट करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से और फोकस करेंगे, तो ये हेल्प करता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. इट अलाउज अस टू डिवाइड shift our attention on a appropriate with task demands and to plan. So prefrontal cortex regulates top down attention, allocating, directing attentional resources based on stimulus relevance. Top down attention includes stimulus gating, reducing distractibility, sustaining attention on relevant information. बट ये चीज एडीएचडी में बहुत ही डिफिकल्टी से पाई जाती है, वो फोकस नहीं कर पाते. दे विल वीवर ऑल द प्लेसेस, उनका माइंड वंडर करता रहता है, रेस ऑफ थॉट्स होता है, उनमें टॉप डाउन अप्रोच स्ट्रांग नहीं होता, बॉटम अप अटेंशन स्ट्रांग होता है. बॉटम अप अटेंशन क्या है कि आप वीडियो गेम दिखा दो, कोई विजुअली अपीलिंग चीज दिखा दो, दे विल कैप्चर दैट वेरी इजीली. So this is how the ADHD brain works. Now on the right hand side you would see the brain connecting networks. It is called default mode network. ये क्या है? It is the interconnected regions of that brain. It displays suppressed activity using cognitively demanding task focus. यानी जब आप focused रहते हो, wakeful होते हो, और इवन जब आप डे ड्रीमिंग करते हो, तो कौन से नेटवर्क्स ब्रेन के कौन से पार्ट में कनेक्ट होते हैं ये बताया गया है. तो अब हम आगे देखते हैं कौन से स्ट्रक्चर्स है, व्हाट स्ट्रक्चर्स मेक अप द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क. सो इन द नेक्स्ट इस slide you can see there are different regions, which earlier slide which I showed the connection, these are the connected parts: the medial prefrontal cortex, parietal cortex, posterior cingulate cortex, precuneus, and middle prefrontal cortex. All these regions connect when we are trying to focus, when we are awake, when we are trying to get the things coordinated well, organized well. So this network helps us to do so. Now further in the next slide, let's assess हम में से कितने हैं जिनको ADHD हो सकता है या है. You can take a self assessment. How do I know I am ADHD? But remember, this is not a substitute for professional diagnosis. It is essential to seek the guidance of a trained mental health professional who can conduct a thorough assessment and make a proper diagnosis. Now, what is it like to have a ADHD? They often feel like brain is working against them. It is hard to manage their symptoms in a way that allows them to function effectively in their personal and professional life. They constantly feel overwhelmed. हमेशा ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चीजें चेज ही करते रहते हैं. They can lead to procrastination. हमेशा हर चीज स्लो होती है, हर चीज मेसअप हो जाती है उनसे. तो अब हम देखेंगे इन दिस द फिगर कैसे रेड पाथवेज और ग्रीन पाथवेज दिखाए गए हैं. So in the next thing, Gaurav sir, if you can show the two parts of the brain. Yes, the green part, it shows the green pathways, and the red path, it shows what are the different levels of ways it works for ADHD. So for example, if you see memory issue, ADHD often involves working memory deficits similar to anxiety related memory disruptions. Overthinking. So next slide, the next part which you will see in the text, you will see memory issue, overthinking hallmark है उनका. हमेशा ओवरथिंकिंग करेंगे, उनका ओवरलैपिंग थॉट्स होता है, तो एंजाइटी लेवल बहुत हाई होता है. ब्रीदिंग इश्यूज, ये हमने खटाव सर के लेक्चर में भी सुना
कि ब्रीदिंग इश्यूज काफी कॉमन है जब डेफिसिट्स और डिसरेगुलेटेड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो क्या होता है? हाइपरवेंटिलेशन, शैलो ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग, दैट मीन्स सेंट्रल इशू है, कॉन्सेंट्रेशन कर ही नहीं पाते कोई चीज पे। एंजाइटी लेवल इतना हाइटेंड होता है कि इमोशनली डिसरेगुलेटेड होते हैं। अब जहां प्रॉब्लम है सोल्यूशन भी होंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द ग्रीन पार्ट ऑफ इट. So in the next text, you would see stress reduction strategy. Yoga is known for stress reduction strategy. हम कहते हैं चले वाते चलम चित्तम, है ना? तो breathing exercise, mindfulness, all which are ADHD interventions. Mediation and exercise. So mediation through meditation, both are evidence-based approach to reduce ADHD symptoms by improving focus, executive function, and emotional control. काउंसलिंग एंड लाइफ कोचिंग बहुत जरूरी है कि हम एक गोल सेट करें उनके लिए और कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करें उनके लिए. Hobbies are must for every one of us, but for them it engages and promotes hyper focus and relaxation on activities which they love to do. So with these strategies we outline for them how to manage their and channelize their energy. So the visualization helps explain how holistic interventions such as yoga can target both conditions, offering a dual benefit. Now next slide, we will understand that how yoga impacts brain. Scientifically research proof कर चुका है कि योगा का इम्पैक्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स पे है. So what is GABA? You can see GABA, which is the green portion. It is shown in the green portion. GABA क्या है? Gamma aminobutyric acid is considered the main inhibitory neurotransmitter responsible for regulation of cortical excitability and neural plasticity. So yoga enhances levels of GABA. एंजाइटी को रिड्यूस करता है, कॉर्टिकल एक्साइटेबिलिटी को काम करता है. डोपामाइन, जो मैंने पहले भी मेरी एक स्लाइड में कहा था, डोपामाइन जो है वो इंक्रीज करता है योगा. तो उससे क्या होता है? मूड्स इंप्रूव होता है, मोटर फंक्शनिंग, कॉग्निटिव स्किल्स, मोटिवेशन मिलता है. द अदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेरोटोनिन. योगा बूस्ट सेरोटोनिन प्रोडक्शन, stress reduction, and depression. So if you see, multiple lines of evidence suggest that yoga promotes cortical GABAergic inhibitory tone and modulates downstream brain region. 12 वीक का योगा प्रैक्टिस लिया गया था और उनका थैलेमिक गाबा वैल्यूज को मेजर किया गया था. तो उसमें पता चला कि इनका इंप्रूव्ड मूड है, एंजाइटी लेवल रिड्यूस हो चुका है, हायर थैलेमिक गाबा लेवल्स could be result of enhanced cerebral blood flow. Now this is very important, cerebral blood flow in the pre-context of yoga practitioners. A magic थिंग विच यू शुड नो कि ब्लड फ्लो सेरिब्रल लेवल पे कैसे जाए, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. बट इससे पहले समझते हैं कि क्या क्या चीज मेजर की गई थी. तो GABA enhancement of dopamine has been observed in ventral striatum of subjects who practice yoga. Several investigations performed on participants after their मेडिटेशन सेशंस होने के बाद उनका सेरोटोनिन मेटाबॉइल लेवल्स यूरिन में चेक किया गया था और उससे पता चला था देयर इज अ रिडक्शन इन नॉरेपेनेफ्राइन. ये जो नॉरेपेनेफ्राइन वैल्यूज है उसके ब्लड सैंपल से लोअर वैल्यूज मिले हैं वीकली योगा करने पर. Next slide, we are going to understand what is this gray matter in the brain. So there is something called as gray matter in the brain and it helps neuronal activity. So ये जो prefrontal cortex है ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, इमोशनल रेगुलेशन के लिए यूज होता है. अभी आप इसके नीचे एक एमिगडाला जो ग्रीन कलर का छोटा सा पी है वो अगर आप देखोगे, एमिगडाला ये हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करता है और स्ट्रेस और एंजाइटी जो लेवल है उसको भी कम करता है.
द नेक्स्ट पार्ट इज हिपोकैम्पस, जो आपको इमली के शेप में पर्पल लेवल में दिख रहा है. यहाँ पे मेमोरी और लर्निंग इंप्रूव होती है. सो ओवरऑल इट एनहांसेस फंक्शनल कनेक्टिविटी एंड कॉर्टिकल थिंकनेस, प्रमोटिंग ओवरऑल ब्रेन हेल्थ. नेक्स्ट स्लाइड. अब हम देखेंगे कि कौन सी टेक्निक्स है एडीएचडी के लिए. एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए. माइंडफुलनेस यानी ब्रेथ माइंडफुलनेस, कोई पोस्चर कर रहे हैं तो तब आप अवेयरनेस क्रिएट करो. काउंसलिंग बहुत जरूरी है, हर एक को काउंसलिंग जरूरी है. एडिक्वेट स्लीप, 7 to 8 hours ऑफ स्लीप. मेडिकेशन प्लस मेडिटेशन, बोथ आर नेसेसरी. हेल्दी फूड, फाइब्रस फूड खाए. फिर फॉलो स्केड्यूल, जो टाइम पे आप उठ रहे हो वही टाइम पे रोज उठे, जो टाइम पे खा रहे हो वही टाइम पे खाना खाए. और रेगुलरली जिस टाइम पे जिस जगह पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो वही जगह पे और वही टाइम पे एक्सरसाइज करें. और बहुत सारा आउटडोर एक्टिविटीज करें तो नेचर से जुड़े रहे. नेक्स्ट स्लाइड. इन दिस वी आर गोइंग टू नाउ सी हाउ टू कोप with ADHD with kids. So now in the next one, हाउ टू कोप विथ ADHD. बच्चों के साथ बहुत ही, बिकॉज वो एंक्शियस लेवल बहुत ज्यादा होता है. तो फर्स्ट आउटडोर एक्टिविटीज, एज आई मेंशन, बहुत सारा स्किपिंग करवाए. सो गौरव सर, इफ यू कैन जस्ट स्टार्ट शोइंग द इमेजेस. सो लॉट ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, स्किपिंग इज वन ऑफ द वेरी गुड एक्टिविटी, मजेदार भी होता है. नेक्स्ट, यू कैन डू लेजी कैट एक्सरसाइज, हम मांजरासन भी कहते हैं. मेडिटेशन करवाए. Then we have this child pose. Next one, pose that happy baby pose. फिर downward facing dog pose, and then shavasana. Now if you see, all this activities is relaxing plus active. इसके साथ सूर्य नमस्कार, जो सूर्य नमस्कार प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. जो मैंने कहा सेरिबेलम में ब्लड फ्लो बढ़ना, तो सूर्य नमस्कार हैज ऑल द पोस्चर्स इंक्लूडेड, डाउनवर्ड फेसिंग पोज, उत्तान आसन. तो ये सारी रीजन्स जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं और एनर्जी भी चैनलाइज हो जाती है. नेक्स्ट स्लाइड. Now we are going to see case studies. You will be surprised. A 9-year-old ADHD patient, after 8 months of yoga therapy, showed 30% reduction in medication. कंप्लीट जो मेडिकल डिपेंडेंसी है वो कंप्लीटली तो नहीं जाएगी, बट 30% रिडक्शन ओनली इन 8 months. इट्स रियली स्टार्टलिंग. ही स्टार्टेड इंप्रूविंग फोकस, इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई. फंक्शनल MRI स्टडी, 45% increase in prefrontal cortex activity observed in children practicing yoga for 6 months. Stress hormone reduction, pranayam technique led to significant cortisol level reduction, alleviating ADHD related stress. Let me give you a story of somebody who also think that, you know, at a very high level, जो बिल गेट्स है उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मुझे भी शायद ADHD था. एंड in an interview which happened in last 2 weeks, he had mentioned that as a child I was so impulsive and so hyperactive. Some teachers believed that, you know, I'm not suitable for this grade, I am better off for the higher grades, while others believe that you are not able to manage things, you are not organized, आप सही तरीके से असाइनमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो. तो बहुत कैरेक्टर असैसिनेशंस टीचर्स, मेंटर्स, कोचेस करते हैं. बट आज अगर आप उनको देखो तो ही ऑल्सो फील्स इफ दैट टाइम, इफ एवरीथिंग मेडिकल वाज सो प्रोग्रेस एंड इफ ही वाज डायग्नोज, he could have been a ADHD child as well. Next slide. अब हम देखेंगे ADHD and neurology. So how this neuroplasticity helps. So yoga helps the synaptic connections. It also helps regulation of autonomic nervous system. So how it helps? It balances the parasympathetic and sympathetic nervous system.
The other one, it is default mode network, जो हमने बात की थी, the connections वाली. So it helps in reducing the anxiety in the default mode network. Now, if you see the images over here, the first image is Prasarit Padottanasana, wide-legged forward bend, Uttanasana, Adhomukh Shvanasana, Halasana, सर्वांगासन, पाद अंगुष्ठासन. ये सारे जो इमेजेस है, इसमें आपका हार्ट ब्रेन के ऊपर है. सो जहां पे भी आपका हार्ट ब्रेन के ऊपर जाएगा तो ब्लड फ्लो सेरिब्रल रीजन में जाएगा. सो दैट विल एनहांस योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. आपका जो फ्रंटल लोब है उसको एनहांस करेगा, आपका कॉग्निटिव स्किल एनहांस करेगा, और एडीएचडी बच्चों के लिए वो काफी फायदेमंद रहेगा, नॉट ओनली फॉर किड्स बट इवन फॉर all adults. Next slide. Here I'm trying to show few postures with props. हमें props क्यों use करने चाहिए? Just not for the flexibility purpose. So Gaurav sir, if you just put the images out there. Yes. अगर आप देखो सेकेंड इमेज उत्तानासन, उसमें ब्रिक्स यूज किए हैं. आप सॉफ्ट ब्रिक्स यूज कर सकते हो, पिलोज यूज कर सकते हो, और अपना जो फ्रंटल लोब है उस पे आप आराम से रिलैक्स रहो. हम यहाँ पे हमारी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है ये कोशिश नहीं कर रहे. कोशिश ये है कि स्टेबिलिटी आए, उस पोस्चर में ज्यादा टाइम रह पाए. फॉर एग्जाम्पल इन द थर्ड इमेज अधोमुख पश्चिमोत्तानासन, इलोंगेटेड पिलो लिया गया है टच करने के लिए. इसमें इसके लिए क्या है, क्योंकि ये रिलैक्सिंग पोस्चर में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम रह पाओ. सिमिलरली अधोमुख श्वानासन है, और द नेक्स्ट वन अधोमुख श्वानासन के दोनों टाइप्स बताए गए हैं. एंड द लास्ट वन अधोमुख वीरासन. इसमें भी अगर आप लोड्स लो और अपने आप को स्टेबलाइज करो इस पोस्चर में, तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काफी एनहांस्ड हो सकता है. नेक्स्ट स्लाइड. द अनदर वे ऑफ डूइंग पश्चिमोत्तानासन जो बताया गया है, इसमें से मेरा एक बहुत ही फेवरेट है जो आपने चेयर के ऊपर देखा है. इट इज विपरीत दंडासन, जो शीर्षासन से पहले दिखाया गया है. ये दिस इज वेरी गुड बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर कीपिंग योर टोज ऑन द सीलिंग एंड हील्स ऑन द ग्राउंड, और चेयर की सहायता से आप वो कर्व कोशिश कर रहे हो. नीचे आप पिलोज रख दो, रेस्ट करो अपना जो क्राउन रीजन है, तो इसमें हार्ट भी एलिवेट हो गया और ब्रेन नीचे है, हार्ट ऊपर है, एंड यू कैन रिलैक्स फॉर मोर देन 3 to 5 minutes. और अगर आप ये करते हो तो आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है, आपका जो मूव स्विंग्स है, वो सारे काफी इंप्रूव होते हैं. शीर्षासन को तो किंग ऑफ ऑल आसनास कहा जाता है. अगर शीर्षासन पॉसिबल है तो हम ये रेगुलरली अगर करते हैं तो ब्रेनल रीजन में काफी ब्लड फ्लो पॉसिबल है. नेक्स्ट स्लाइड. अब सब तो शीर्षासन नहीं कर सकते, नॉट एवरीबडी इज एज फ्लेक्सिबल, तो बहुत सारी बाकी पोस्चर्स है जो शीर्षासन जैसे फायदे दे सकती है. सर्वांगासन ले लो, जो आप काफी प्रॉप्स के साथ यूज कर सकते हो. कुछ नहीं हुआ तो लास्ट पोस्चर आप देखो, अपने जो पैर है वो आप सीलिंग पे लगा दो स्ट्रेट, और कोशिश करो कि आप लॉन्ग लोड लो, और लॉन्ग लोड अपने कमर के नीचे रखो तो हार्ट थोड़ा नीचे जाएगा and your shoulders are quite relaxed. So this posture you can stay for more than 10 minutes and the blood flow starts. You will feel the blood flowing from your calves to down, and this helps to the brainal region. At the last, I would say ADHD brains are wired differently. You are not weird, you are wired differently. They are also creative, curious, energetic. They tend to think outside the box. Kabhi kabhi to they don't even aware, they are not even aware there is a box. ADHD brain excels with urgency, novelty, and challenge. ADHD brains aren't broken, they are just wired differently. They just need understanding, support, and the right environment to thrive. So, to anyone with ADHD, you are not weird, you are wired differently.
not a veiled version of normal. You're different, you're beautiful, and not alone. Welcome to the tribe. Thank you. Hari Om.